चलिए आवाज थोड़ा सा हम सुनने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो हम माया से मुक्त होने लगते हैं। माया क्या है? आवाज माया है, कान माया है, सुनने की क्रिया भी माया है। हम कहते हैं जीव भाव, ये भी माया है। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब माया है। माया के 24 रूप हैं, जिसे हम 24 तत्व कहते हैं, और इनकी बड़ी महिमा है। इस इनको 24 एल्डर्स कहा गया है। एल्डर्स किसको कहते हैं? जैसे हम हैं, ये एल्डर हैं, जिनका महत्व हमसे कम नहीं ज्यादा ही माने। तो 24 एल्डर्स इन्हीं को कहते हैं। ये सब माया है। तो जो ना हो, जो है, उसको लेकर के स्वीकार करके हम कोई अच्छा काम कर लें, ये तो आसान है। जो है ही नहीं, उसको लेकर के काम कर लें तो यही पूर्णता है। हम ज्ञान के साथ तो काम कर ही लेते हैं, हम अज्ञान के साथ काम कर लें, इसी के लिए हम पृथ्वी पर आते हैं। उसी अज्ञान को अंधकार कहते हैं। ये माया क्या है? इसी को अज्ञान कहते हैं। अंग्रेजी में इसको इग्नोरेंस कहते हैं। समित्य यू आर द ग्रेटेस्ट मास्टर राइटर। पूरे जितने वेद हैं, जो कभी थे या जो आएंगे, सबका कॉम्पैक्ट वर्जन होली साइंस। ये है। इसमें समित्य क्या लिखते हैं कि जिसको हम एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं, अणु कहते हैं, ये होता नहीं है, लेकिन दिखता है कि है। अनुसंधान होता है, उसमें प्रोफेसर होते हैं, नोबेल प्राइज मिलती है, और उसी परमाणु के सहारे इतने काम कर लेते हैं, पूछिए नहीं। यानी 24 तत्व तो होते नहीं हैं, इन्हीं के सहारे बहुत बड़े बड़े काम किए गए। जब इनके सहारे ऐसा काम कर लीजिए कि हम सौरमंडल बना ले। सौरमंडल का अर्थ है सूरज, चांद, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, ये सब। और पृथ्वी पर जितनी रचनाएं हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब, सबका मैं सृजन कर लूं। इसी के लिए सिर से पैर कमल तक के रूप मिला है। इस रूप में माया और ब्रह्म एक साथ होते हैं। जब माया और ब्रह्म को एक साथ अनुभव करने में सामर्थ्य हो जाए, तो इसका लक्ष्य पूरा हुआ, जिस लक्ष्य के लिए प्रकट हुआ है। तो कैसे होगा? बहुत आसान है। अभ्यास करते जाइए, सुनते जाइए, करते जाइए, सुनते जाइए, पढ़ते जाइए। हमने को सुना और पढ़ा, अभ्यास नहीं किया, तो पागलपन होता है। पागलपन क्या है? फिर ऐसा आदमी बहुत ही प्रॉब्लम करता है घर में, सोसाइटी में, समाज में। क्योंकि हमने पढ़ लिया, पढ़ करके हम पीएचडी कर लिए, किताब भी लिख दिए, प्रोफेसर भी हो गए, और बहुत बड़ा नाम भी है दुनिया में, है क्या? लेकिन जो मैंने पढ़ा उसको किया तो है नहीं। तो सही है गलत है ये पता तो चला नहीं। हमने एक्सपेरिमेंट किया, क्या पता चला कि भाई ये देखो एक्सपेरिमेंट किया, ये हुआ। ठीक है, जो हुआ वो है क्या? हमने मान लिया कि सच है। सच होगा, सार्वकालिक होगा। सच क्या है? हम हनुमान जी के पुजारी हैं, बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी हैं तो हर जगह होंगे। तो जापान में भी होंगे, चाइना में होंगे, अफगानिस्तान में भी होंगे, सऊदी अरबिया में होंगे, ईरान में, इराक में, अमेरिका में, कनाडा में। हनुमान जी अगर वहां नहीं हमको दिखते हैं, तो हम जिसको हनुमान जी माने, डाउट होता है कि सच है कि नहीं। हनुमान हर जगह कैसे हैं? खोज करिए। कैसे खोज करेंगे? जब माया और ब्रह्म को एक पकड़ लेंगे, दोनों के एक साथ। माया और ब्रह्म को एक साथ कैसे पकड़ेंगे? बड़ा आसान है। सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्र हो जाइए।
इसकी अनुभूति करिए। जो अनुभूति है इसको मान लीजिए सब कुछ यही है। अगर वास्तव में ये पता चल जाए कि हम आपके बिना नहीं रह सकते तो आप जाएंगे नहीं। आपको पता चल जाए कि हम आपको इतना मानते हैं जितना कोई नहीं मानता होगा आपको, न आपके माँ, न पिता, न पत्नी, न बच्चे, न पत्नी, कोई भी नहीं, न रिश्तेदार, सच में मानते हैं। अगर दिल से पता चल जाए तो आप जाएंगे नहीं। ऐसे सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभूति है इसको इतना प्रेम करिए। यही हमारे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, यही काली, दुर्गा, सरस्वती, निराकार, साकार, सब कुछ यही है। यही शांति तत्व है, यही ज्ञान तत्व है, सब कुछ यही है। जब इसको आप स्वीकार कर लेंगे तो सिर से पैर की उंगली तक आप दोनों को पकड़ लिया। जब तक चाहेंगे पृथ्वी पर रहेंगे और जब ना चाहेंगे तो स्वेच्छा से जाएंगे। और जाने के पहले एक शांति दूत बन करके जाएंगे। लोगों को शांति दे करके जाएंगे, लोगों को समझा करके जाएंगे, लोग खुश होंगे। और फिर लोगों को ये भी पता होगा कि आप आएंगे, परमानेंट नहीं गए। जैसे जीसस क्राइस्ट गए और फिर आए, किसी ने देखा नहीं कहाँ आए। परमहंस योगानंद, कृष्ण गए फिर आए, परमहंस योगानंद। आप कहते कैसे मैं जानता हूं? मैं जानता हूं क्योंकि जब अपने को जानता हूं तो उनको भी जान लिया। तो पहले अपने को जानिए। अपने को जानने के यही नियम है कि सिर से पैर की उंगली तक पूरा अस्तित्व है माया। और वी आर हैविंग लॉट ऑफ फियर ऑफ मेनी थिंग्स। आई वांट टू गेट रिड ऑफ फियर्स। व्हाई वी हैव फियर्स? Therefore, because we have fear, therefore we want to read the book. If you are reading the book, you remember it, you can write it better than what you have read. You have presented a thesis. What you have read, what you know, you are able to write that, but you have written better way, but you have never practiced it. If you are reading and speaking and writing and never practice, then what we will develop? Ignorance. What is ignorance? This ignorance is called avidya. What is avidya? The greatest master, greatest writer of the present time, and one of the greatest writer that who has condensed the Vedas, Vedas which were published in the past, which are present now, we are going to publish in the future, complete Vedas and the science of creation, preservation and change, and about the whole universe, about how to get rid of all problems and how to speak, how to teach. The best scripture written by Jnanata Samyukteswari, Holy Science. In this Samyukteswari writes, what is the ignorance, what is the Maya? He has written, Avidya is called the Maya. And what is Avidya technically? I want to know technically, I want to weigh it, I want to touch it. Then atom is called Avidya. What is the atom? Atom is something having mass, weight and volume. What is the mass? When I tense, I stretch, I feel tightness. Tightness represents mass, weight, volume. Head to toes having length, volume and everything. Oh, it means that is called the I am experiencing congregation of atoms. But Samyukteswari writes atom is Maya. Illusion never exists. The head to toes what I feel is never exists. But this help of head to toes we are able to work. If you are working with the something which never exists, then you are a real educated person. Something which exists, to work with that is very easy. Something which does not exist, but try to take that creation which never exists and demonstrate highest work. That is what we need. Then how to get it? That is very easy. What you call 24 elements. What is 24 elements? This is called the omnipresent God. Omnipresent God. God has become 24 elements. We call it 24 elders. In the Holy Science you will get it.
This is 24 elders. What is elders? Why not? Because elder means I have to give respect and honor to you. I have respect and honor for me, but I will give you more than this because you are elder. What is the dust particle? Elder. Each and every plant is elder. Each and every bacteria, virus is elder. Therefore, omnipresent God is manifesting His consciousness into 24 elements. These 24 elements is called 24 elders. With the help of 24 elements, and try to do something. What something? Work like Brahma. Create anything what you need. And what you have created, learn how to preserve it and how to make a change. That 24 elements is called the Maya. This Maya is called ignorance. Head to toe, this structure is having a special work that with the help of Maya you have to learn. Something never exists. Try to help up that things which never exist and do everything. It is very impossible. Nothing is impossible. Head to toe, what you feel. It is complete combination, complete oneness with the truth and ignorance, with the Maya and Brahma. Maya and Brahma both exist together. That together consciousness in the form of head to toes. What you feel, Maya and Brahma together, then you have to demonstrate. You are on this earth to demonstrate this, that you take a help of something which never exists and create everything, whatever you want. You can create plants, animals, bacteria, virus. You can create solar system, galaxies, everything. All right, you can do it. How? If for this holy science explains clearly, head to toe what you feel. It is presence of all in all. Brahma consciousness, which is called element of truth, and Maya, 24 elements, both exist together. That exists, we feel in the form of head to toes, various changes within. Whatever you feel within head to toes, various changes together, accept it is all in all. I do not want anything. I want peace, I have peace. What is the peace? Head to toe, what I feel is peace. I want knowledge. It is perception of knowledge. I want power. It is presence of all power. I want to know past. Feel head to toe, accept it, presence of all in all. You will know complete past. Okay, all right. But what is the present system of learning? Try to read a book and speak it and write it. When you read 10 books, write one book more 11. Then you have done PhD. Therefore, then what I have written it, I got PhD, but I have never done that. I never lived that. If you have not lived the principal philosophy, what you have written, what you have read, then what you will accumulate? Illusion. The activity which is very dangerous. Therefore, I say, I am professor, I am PhD, I am the best professor in the world. I got Nobel Prize. On what? Because I discovered, I am Niels Bohr. I discovered about the electronic configuration in the atom. Okay. Or I am Einstein. I got Nobel Prize. I am C.V. Raman. I discovered Raman effect. I got Nobel Prize. What you discovered? Maya. It never exists. But I claim I am the best. That is the worst thing in the life. If I do not know anything, but I say I know better than you. Therefore, all problems are created by those persons who experience that I have read a book, I can write it, I can speak it, and I can read 10 books,
Then I can write one more, that will be 11th. All these activities, it created horrible condition on this earth. Because what you have read, you never live it. Moment you live it, then you will know it is what is this. Now we are going to live it. Whatever books we are writing, it is all came from inside thoughts and ideas. How you can write book without head and spine, without head to toes? Okay, write the book without help of head to toes. You cannot write. It means the content of the book, what I have written, this idea, thought is preserved somewhere. With the help of this, we take it from that somewhere and we wrote it. Therefore, if we want to understand clearly, to remove all problems on the personal level and problems of the all human beings, practice Maya and Brahma together, give equal honor, respect to both. How to do it? It is very easy. Accept this principal philosophy. Head to toe what we feel is presence of Maya and Brahma both. When you feel it, accept it, it is all in all. I want power, it is presence of power. I need knowledge, it is presence of knowledge. I want peace, it is presence of peace. I want joy, it is presence of joy. Whatever we want, we can get it. The moment you practice this Maya and Brahma together, how to practice? Very easy. Feel head to toes. What you feel, accept it is all in all. Breath, all in all. Each and every change, what you feel, heaviness, lightness, accept it is all in all. Just practice it. By this practice, slowly, slowly will develop a state of fearlessness, a state of joy and peace. By repeated effort, you will reach to the stage that you will have no fear. If you have no fear, you will not create fear in any life. This is the purpose of our existence on this earth. And with this practice, we realize this is the purpose of our existence on this earth. And with this practice, we realize we are able to solve problems on personal level. If anybody is having interest, you can solve their problems. If anybody is having interest, you can solve their problems. This is the brief scripture for today. ये आज के लिए है, कल सुबह फिर मिलेंगे. ये क्लास का टाइम हम चेंज करना चाहते हैं क्योंकि विदेशों से बड़ी रिक्वेस्ट आ रही कि हम पूरा अंग्रेजी में क्लास लें. ये हमारे सामने तो हिंदी अंग्रेजी दोनों सुन लेते हैं, जो दूर हैं उनको नहीं सुन पाते हैं. क्योंकि बाहर जो दूर रहता है ना, मान लीजिए आपका बेटा, भाई, माता पिता कोई दूर हो, तो दूर वाले हो तो आदमी उनसे इमीडिएट फोन आ गया बात कर लेता है. अरे हमसे बात कर, अरे रुको रुको अभी फोन आया है ना उनसे, कहाँ रहते, वहां रहते, अच्छा वेट करते कि नहीं. इससे हमारी जिम्मेदारी होती है पहला क्लास में इंग्लिश में लूँ. 5:30 to 6:15 मैंने इनको 45 मिनट टाइम दिया है कंप्लीट इंग्लिश का क्लास. आप अपना रिचार्जिंग वाले जो प्रैक्टिस करते हैं, आप 4 से 5 में या 4:30 से 5:30 में अपना रिचार्जिंग प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर लीजिए. जब 5:30 से 6:15 तक उनका क्लास हम कर लेंगे, तब आपके साथ फिर हम 6:15 से 7 बजे तक रहेंगे. ये टाइम टेबल कल से शाम का. I want to request you, many demands is coming from all over the world. They do not understand Hindi. You give bilingual. When they say Hindi, because they are far, they have stress. They want complete class in English. Then from next class, Friday onward, Friday evening, your classes will start at 4. You have to take little lunch, food exactly within time up to the 12. Finish it, take a light lunch so that you can practice at 4. 4 to 5:30 have all practices done. Then after 5:30, if you want to sit in English class, you can sit. Otherwise, go and have a walk, take a cup of tea.
make here nice tea and you drink, I will also drink with you. Then after that, 7:15, 6:15 to 7, again join this session. Details Swamiji will give, write it, you can write it. You can listen it. This remember it. This is for today. आइए हम 2 बार में श्वास और प्रश्वास का अभ्यास करते हुए माया ब्रह्म दोनों से जुड़ जाए. Practice double breathing and feel oneness with the Maya and Brahma both. Head to toe changes within. एक बार फिर से रिपीट करें. Let us bow down to our devotion in complete science Kriya Yoga. क्रिया योग में अपनी भक्ति को हम प्रकट करें. बैठेंगे. Now we will sit. आंखें खोलें. Open eyes.